welcome to the next lecture of body fluids and circulation. And here in this lecture we will discuss about the heart of birds and mammals. We are discussing the heart of birds and mammals together because both of these organisms are having four-chambered heart. And after that we will discuss the human heart in very detail. So here the heart of birds and mammals. Both birds and mammals are having four-chambered heart. So here the four-chambered heart is present in birds and mammals. Now, what are these four chambers? Here the partition of ventricles is getting completed. It means upper two chambers are right and left auricle and the lower two chambers are right and left ventricle. So here upper two chambers are called as right auricle and left auricle, while the lower two chambers are called as right ventricle and left ventricle. The accessory chambers are not there. Sinus venosus is completely merged with right atrium. So here what is happening with sinus venosus? Sinus venosus is completely merged with right auricle, and the truncus arteriosus is divided into two branches. Truncus arteriosus divides into two branches, that is one systemic arch which forms aorta later on and one pulmonary arch. Okay? So what is happening with the accessory chambers? Sinus venosus is completely merged with right atrium and truncus arteriosus divided into two branches, that is systemic arch and pulmonary arch. Clear? This type of heart is called as four-chambered heart and the circulation is double circulation. Now we have to draw the structure of heart. So here the structure of heart, four-chambered heart in birds and mammals. So the four-chambered heart is there. This is the first chamber. Here is the second chamber. Clear? Here is two ventricles. Clear? Now here is the one ventricle, one auricle. This is the second auricle. Clear? Here this is the auricle. This is the ventricle and this is the second ventricle. Here, this is the second ventricle here, and here this part is getting completed. This type. Okay? This type of partition is there. So these are the auricles and ventricles. This is called as right auricle. Here is left auricle. Right ventricle, left ventricle. Clear?
Now the sinus venosus is completely merged with right auricle. Here the deoxygenated blood comes in this right auricle. Deoxygenated blood comes in this right auricle. So here the blood is deoxygenated. It is coming inside the right auricle with the help of superior and inferior vena cava. And in case of left auricle, the blood is oxygenated and it comes from the lungs. So here is oxygenated blood. It comes from the lungs with the help of pulmonary veins. Now, where the systemic and pulmonary arch is there. So, here is the pulmonary arch. Okay, the blood, deoxygenated blood from right auricle to it goes to the right ventricle, and oxygenated blood from left auricle to left ventricle. ठीक है, दोनों ब्लड हमारे पास कहाँ गए? वेंट्रिकल्स में, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड है क्योंकि वेंट्रिकल्स का सेपरेशन यहाँ पे हो चुका है. तो यहां से ब्लड जो जाएगा, आई एम सॉरी, हियर द ब्लड गोज टू द पल्मोनरी आर्च. ये जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होगा, दिस ब्लड गेट्स pumped in the pulmonary arch. This is called as pulmonary arch, जो कि आगे जाके पल्मोनरी आर्टरी बनाती है और दोनों लंग्स में ये ब्लड जाता है. तो यहां पर ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड. एंड द सिस्टेमिक आर्च. Now one difference is there in the heart of mammals and birds. The systemic arch in the heart of mammals, it moves towards the left side. Clear? Systemic arch जो है, ये systemic arch लेफ्ट साइड से मूव करती है, जो कि बाद में एओर्टा फॉर्म करती है. सो हियर इज द सिस्टेमिक आर्च, एंड दिस सिस्टेमिक आर्च tilted towards the left, which later on forms the aorta. It will forms the aorta, which is slightly tilted into the left. और यहां से ये ही सिस्टेमिक आर्च, यदि बर्ड्स के केस में है, टू सिस्टेमिक आर्च नहीं है, ओनली वन सिस्टेमिक आर्च इज देयर. दोनों में, बर्ड्स और मैमल्स में एक ही डिफरेंस है. बर्ड्स में सिस्टेमिक आर्च राइट साइड से मूव करती है और मैमल्स में सिस्टेमिक आर्च लेफ्ट साइड में मूव करती है. तो ये लेफ्ट साइड में मूव करेगी, और यदि ये बर्ड्स के केस में है, देन इट विल मूव्स इन द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट or in right part of the body. This is only the difference between the heart of birds and mammals. clear? यहां पर जो बेसिकली सर्कुलेशन होगा, the circulation is double circulation. clear? One more thing, this is the pulmonary arch. And here is the systemic arch. Here the circulation is double circulation. यहां से जो ब्लड आ रहा है डबल सर्कुलेशन में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से कहा जाएगा? इस पल्मोनरी आर्च से होता हुआ लंग्स में. ये पल्मोनरी आर्च बाद में पल्मोनरी आर्टरी फॉर्म करती है और दोनों लंग्स में जाती है. यहां से दोनों लंग्स में जाएगी. और जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होगा इस सिस्टेमिक आर्च में. दिस सिस्टेमिक आर्च फॉर्म्स द एओर्टा. क्लियर? एंड दिस सिस्टेमिक आर्च इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन मैमल्स, एंड इन केस ऑफ बर्ड्स इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट. क्लियर? ये सिर्फ एक डिफरेंस है मैमल्स और बर्ड्स के हार्ट में. Rest of the structure is same, and the circulation which is present here, that is double circulation.
and we all know about the double circulation. What is double circulation? Double circulation means the circulation of blood twice in heart during each cycle. ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू द बॉडी टिश्यूज. बॉडी टिश्यूज में पंप होने से पहले हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आता है. दैट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज double circulation. Clear? So this is all about the heart of birds and mammals. In our next segment, we will discuss about the heart of human beings in detail. Thank you very much.